Students, today topic is switch block. As you all know, in previous class, we have already learned about block, which is loop, right? But in today's session, we will start switch block, and it is a very interesting block. Today, I'm going to tell you how you can access switch block, how you can use switch block, what is the role of switch block. Technically, all basic things about switch block today I'm going to tell you. So you have to listen each and everything in a very careful manner, and you know very well, for that you have to open Lego Mindstorm Education EV3 software from your system. And you all are very well known about what is the process to open Lego Mindstorm Education EV3 software in your systems. So as you all know, first of all, you have to go on start button, and after that you have to find out Lego Mindstorm Education EV3 software. And then you have to create a fresh new project. After that, you have to click on this given program, and then you have to create a new program by just clicking on open button. Right? It is loading now. So first of all, I would like to rename this program by switch block, because today we will learn everything about switch block, right? So first of all, I would like to tell you where switch block is present in our palette. So here's the second block, that is flow control, and in which we have fourth block, that is switch block. So you have to click on that. After that, you have to drag your mouse and put here like this, right? So this is the switch block. What is the use of switch block? If we have two conditions together, then we can use switch block. हमारे पास अगर दो कंडीशंस हैं और हम उसको पैरेलली पुट करना चाहते हैं, मे बी हमारी उसमें से एक कंडीशन ट्रू होगी और एक कंडीशन फॉल्स होगी, तो उसके लिए हम प्रोग्राम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्विच ब्लॉक. स्विच ब्लॉक कंडीशंस पर काम करता है. इफ एल्स, राइट? इफ एल्स मीन्स या तो ये कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज दूसरी कंडीशन ट्रू है, और जो भी ट्रू होगी कंडीशन वो उसी को रन करेगा. दैट इज द रोल ऑफ स्विच ब्लॉक, राइट? अगर हम इसको मैन्युअली चेक करें तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर. वी हैव वन ऑप्शन इन दिस लिस्ट. So many options are here: touch sensor, ultrasonic sensor, and we will discuss all things later. But before that, we have to learn basic concept, that is logic, right? So you have to set here logic. We have two conditions here, two statements here, true and false. For example, अगर मैं अपने रोबोट से टू साउंड्स प्ले कराना चाहती हूँ, like अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो my robot will create a sound yes. अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, राइट, अगर मेरा ये वाला स्टेटमेंट रन हो रहा है, ये करेक्ट है, देन माय रोबोट विल क्रिएट अ साउंड नो, राइट? सो आई एम गोइंग टू
put here first true, and for that I would like to put the condition here. I will take sound block from this first block, right? This is what? This is action block. In action block we have sound, so you can take it, and after that you have to set here yes or no. So you have to find out the sound of yes or no. Yes, here it is, right? So you can put here yes. If condition is true, then your robot will create a sound yes. And if condition is false, then your robot will make a sound false. That means no, right? So you have to put here no. Here it is, right? So you have to put here no. Correct. Right now, I will set the conditions manually, right? आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं conditions को क्या कर रही हूँ, manually set कर रही हूँ. अभी रोबोट्स फाइंड आउट नहीं कर रहा है कि वो किस चीज को, ट्रू कंडीशन को फाइंड आउट कर रहा है कि फॉल्स कंडीशन को. राइट नाउ आई विल सेट each and every condition manually. Like firstly I will put here true, that means this block will run and this block will not run, right? It means ये वाला block run करेगा and your output will be yes. If you will set here manually false, that means जो condition find out की गई है that is false, and false block में आपके पास क्या है, sound no. So your robot will create no, right? ये आप मैनुअली सेट कर रहे हैं. अब आप इसको जब अपने लैब में स्टार्ट करेंगे डाउनलोड करके, तो आपको इसी तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा कि जब आप ट्रू पुट करेंगे एंड देन प्ले करेंगे, साउंड क्रिएट होगी यस की, और अगर आप फॉल्स पुट करेंगे एंड देन प्ले करेंगे तो आपको साउंड गेट होगी नो की. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ स्विच ब्लॉक. दैट मीन्स जो भी कंडीशन ट्रू होगी वही ब्लॉक रन होगा. फाइन. Okay, now I'm going to tell you one more thing. We have one more option, that is brick buttons, right? हमारे पास हमारे EV3 में हमारे पास brick buttons हैं. That means top button, left button, right button, down button, center button, right? We have 5 buttons. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अपने ब्रिक बटन्स को. सो आई वुड लाइक टू पुट हियर ब्रिक बटन्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेट हियर. यू कैन सी दिस इज द डिफॉल्ट केस. दैट मीन्स अगर आप कोई भी वैल्यू सेट नहीं करते हैं, you can put in the center block, you will receive 0. that means nothing. आपने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया तो आपका ये वाला साउंड क्रिएट होगा. अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर पुट किया 1, तो आपका लेफ्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा. लेफ्ट के लिए आप 1 सेट कर सकते हैं. अगर आप लेफ्ट पुट करते हैं तो आप कोई और साउंड क्रिएट कर सकते हैं. तो फॉर दैट आई वुड लाइक टू ऐड सम मोर केसेस. तो अगर मुझे मोर केसेस ऐड करने, बिकॉज यू कैन सी हियर वी हैव ओनली 2 केस राइट नाउ. इफ आई वांट टू ऐड सम मोर केसेस हियर, सो आई हैव वन ऑप्शन दैट इज प्लस साइन हियर, which is add case. So you can add it like this. You will receive one more case, you will receive then one more case. If you will click again, right, and I want at least 5 cases here, so I will add once more on this plus button like this. Now I would like to zoom out my screen ताकि आप इसको properly देख पाएं. right? Correct.
तो ये आपका ब्लॉक हुआ कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, फर्स्टली आई वुड लाइक टू जूम इन बिकॉज आपको शो करना है। यस, तो हियर इज द केस, आई वुड पुट हियर 0, दैट मीन्स डिफॉल्ट केस। तो आपका साउंड ये वाला नहीं होगा, यू कैन पुट हियर साउंड एनीथिंग एल्स लाइक लाइक ओ साउंड हम यहाँ पर दे सकते हैं। सो विच इज एन ऑन एक्सप्रेशन, so you have to close communication sound and you can open oh sound, right? That means कोई भी आपने की प्रेस नहीं की है। So you can take oh sound, oh ये भी आप ले सकते हैं, take oh, right? तो that means आपने कोई भी की प्रेस नहीं किया है, कोई भी की अगर आप प्रेस नहीं कर सकते हैं तो your robot will create a sound oh. But now I would like to mention my next case. If my robot, if I will press left key, then my robot will create a sound which is left. So I'm going to go back in instructions. Okay, expressions को आप close कर देंगे. You can take information block of sound. Yes, here it is, left. Right, जैसे ही आप left की press करेंगे तो your robot will create a sound left. Then you have to add next case here. Here is the question mark. You can set second, that is center. Right, this is for center. You have to set here center, and then you have to take sound block. You can copy from here. Okay, doing complete block. Yes, you can put here like this. And then you have to set here sound center. You can find out the center sound. Start, you can put here start. Okay. Yes. Then you have to set next case. That means 3. And 3 is for right. So you have to put here sound block. Yes. And then you have to set here right. Information में आप जाएंगे again. And you have to find out right. Yes, here it is. So you have to put each conditions in each case like that. So you have to set here break button and measure. तो that means ये क्या करेगा, आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग, आपके केसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रन करने वाला है। अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी प्रेस नहीं करते हैं तो इट विल क्रिएट अ साउंड ओ। अगर आप लेफ्ट बटन अपने EV3 ब्रेक से प्रेस करते हैं तो इट विल क्रिएट अ साउंड लेफ्ट, राइट? So you have to check in lab this you have to check the result of the same code in lab, right?
Now I'm going to tell you one more thing. Like if you want to switch to tabbed view, आप इसको switch कर देना चाहते हैं tabbed view में, then you have to click here like this. Now you can see अभी आपको जो एक problem फेस करनी पड़ रही थी वो अब आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी है. Now it will convert into a small code, and here is the option that is arrow button, right? तो यहाँ पर आपको एक एरो बटन विजिबल है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल मूव वन बाय वन लाइक दैट. If you want to move on first block, here is the default case. Now second one is left case, third one is start case. Then you have to click on this forward button, and now you have to check out the next one, that is right case, right? If you want to click on this forward button again, you will receive the next block जो कि हमने add नहीं किया था, right? So here you can add it like this. You can add fourth up, right? And you can take this sound block here, and then you have to put the sound up here. Yes, here it is. तो आप इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं. जो प्रॉब्लम आप पहले फेस कर रहे थे, now it will resolve it, it will solve it, right? So here's the way you can, again, if you want to switch in a flat view, you can click on this once again, and if you want to switch again in a tab view, then you will click on this button once again. So this is the basic concept about switch block, and in the next session we will discuss some advanced techniques about switch block, because right now we are going to set conditions manually, and in next case I will tell you कि वो आप कैसे without manually भी switch block work करता है. I will tell you in next session. I hope it is clear.